Hello everyone. Okay, so बिफोर सूट एंड आफ्टर सूट ये जो दो एनोटेशंस है टेस्ट एनजी के अंदर जिसमें ज्यादातर लोगों को क्वेरी होती है कि इसका रियल टाइम हम यूज कैसे कर सकते हैं. लेट्स से in a particular test case we have at the rate test annotation, so we use before class. So if you want to run anything just before at the rate test annotation, we normally use before class or before test. Now, so what is the use of before suit? सो मैं आपको एक नॉर्मल आइडिया देता हूँ ये सेशन में कि आपको आइडिया आएगा कि कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं और व्हाट एग्जैक्टली वी कैन राइट एज अ कोड. आई मीन इफ आई वांट टू राइट समथिंग, सो व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक वी कैन राइट इन बिफोर सूट. फाइन. सो देखो, स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. स्ट्रक्चर कुछ इसमें हम ऐसा बनाते हैं. आई हैव क्रिएटेड टू मॉड्यूल्स, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2. In module 1, I have two test cases. In module 2, I have one test case. All right. So structure is like that. Let me create one more test case. Let me create one more test case in module 1. Let's say it is test case 1. Test case 1. And in test case 1, we have this is the logic of the test case, right? And that logic we usually write it in at the rate test annotation. Perfect. So we'll write our logic over here. Fine. Now this is the method public void check test case. This is the method. Guys, see, ये annotation का कैसे यूज करना है वो it all depends on your thought process. It all depends on the functionality that you are developing. Okay, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ it is just an idea. Okay, आप ऐसा भी बना सकते हो. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही बनता है. It can be used in a multiple ways. Okay, but this is a generic scenario I'm talking about. So यहाँ पे है before class. Before class, and in before class, चलो एक सेकेंड हम लोग कुछ थोड़ा मैं आपको रन करके दिखाता हूं. Okay, I have Excel file. So in the Excel file, I have mentioned test case ID. Okay, I have test case description. And third one is execution. Okay, I have test case ID, different IDs. Let's say it's the name of our class. It is name of our test case. Let's say sign up, product creation test case, manufacturer creation, change password. All right. And description, right? Description of sign up, something like this. Okay. Description, description, and description. All right. It's not compulsory to write this, but okay, we usually write it because if in your team or maybe someone from external team, if they simply go to the structure and they will try to understand what exactly test cases you have developed, so they will get all in detail information from the particular sheet. Okay, I'll simply mention, let's take it in a border, and here I have sheet name test cases. Okay, now what I have done, guys, what I have done, I have written execution mode. I have written execution mode over here. Let's say I have written yes.
no, yes, no. So what I want to do, if I run any of the test case, मैं अगर ये manufacturer creation test case को run कर रहा हूं, which is written over here, जिसका कोड यहां पे है. Okay, see, I have written test case 1. So let's say my test case 1 is like this. Okay, test case 1 is here. So it will come over here. It will check this condition. If the execution mode of the particular test case 1 is Y, or let's say Y, instead of yes, no, can we write Y and Y and? All right. So if the execution mode is Y, then this test case will get executed. Okay, so it could be even this Y or this Y, uppercase, lowercase, both, right? If the particular test case is having execution mode as Y, तो ये टेस्ट केस रन होना चाहिए. सो ये जो लॉजिक है पर्टिकुलर टेस्ट केस का, दैट आई विल राइट डाउन ओवर हियर. सो मैं यहां पे लॉजिक लिखूंगा, इफ द एग्जीक्यूशन मोड टेस्ट केस इज वाई, then the test case will get executed. परफेक्ट. तो एग्जीक्यूशन मोड अगर y है तो टेस्ट केस रन होगा. अगर एग्जीक्यूशन मोड n है तो टेस्ट केस रन नहीं होगा. द टेस्ट केस विल बी स्किप्ड. तो ये लॉजिक मुझे यहां लिखना है. परफेक्ट. राइट. इफ द टेस्ट केस इज y, तो ये एट द रेट टेस्ट रन होगा. अगर ये n है तो ये एट द रेट टेस्ट रन नहीं होगा. सो ये लॉजिक हम लिखते हैं बिफोर क्लास में. नाउ देयर इज वन मोर क्लास इन द सेम पैकेज. व्हाट एग्जैक्टली वी डू, जैसे हमारा मॉड्यूल 1 है तो मॉड्यूल 1 के ये टेस्ट केसेस है. देयर आर 3 टेस्ट केसेस आई हैव क्रिएटेड, 1 2 3. Okay, so I will create one more separate class and I'll give the name as parent module 1. मैं नेम दे दूंगा parent module 1, right? और ये जो parent module 1 है, ये जो parent module 1 है, the name will be check test suite, right? और इसका एनोटेशन हम रखेंगे बिफोर सूट. चलो, तो ये क्या चेक करेगा गाइज? ये चेक करेगा बिफोर सूट के अंदर हम जो कोड लिखेंगे, दैट कोड विल बेसिकली चेक द एग्जीक्यूशन मोड ऑफ दिस मॉड्यूल 1. नॉट अ स्पेसिफिक. गाइज देखो, ये जो टेस्ट केस 1 का एग्जीक्यूशन मोड हमने उसके ही अंदर बिफोर क्लास के अंदर उसका लॉजिक लिखा. बट मुझे मॉड्यूल 1 मतलब जो पूरा पैकेज है, वो पैकेज के अंदर तो मल्टीपल टेस्ट केसेस है, तो मुझे पूरा पैकेज ही स्किप करना है. आई डोंट वांट टू रन एनी ऑफ द टेस्ट केसेस ऑफ मॉड्यूल 1. तो हम लोग क्या करेंगे, विल क्रिएट वन मोर शीट और अ न्यू एक्सेल फाइल. इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपको कैसे करना है, आप पे डिपेंड कर रहा है. बट हियर इंस्टेड ऑफ टेस्ट केस आईडी आई विल मेंशन टेस्ट सूट आईडी, test suite description. Perfect. So here we have module 1, module 2, module 3 and module 4. Perfect. So we have different modules and the execution mode is also there. Perfect. So यहां पे जो हम लॉजिक लिखेंगे, यहां पे हम जो लॉजिक लिखेंगे, ये लॉजिक टेस्ट सूट का होगा, टेस्ट केस का नहीं होगा. मेक श्योर. सो माय टेस्ट केस विल बी, मेरा कोई भी एक टेस्ट केस में अगर रन करूंगा तो सबसे पहले क्या चेक करेगा, वो सबसे पहले यहां चेक करने के लिए आना चाहिए. सो यहां पे वो क्या चेक करेगा कि इफ द एग्जीक्यूशन मोड ऑफ द टेस्ट सूट इज वाई, देन all test cases will be checked
ऑल टेस्ट केस विल बी एग्जीक्यूटेड. ओके, नाउ वो टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना है, उसके लिए हमने लॉजिक लिखा है बिफोर क्लास में. फाइन, बट ये स्ट्रक्चर वर्क कैसे करेगा? This particular structure will work if we have mentioned, let's say test case 1 extends parent module 1. ओके, तो ये जो टेस्ट केस 1 है, दैट इज अ चाइल्ड, पेरेंट मॉड्यूल 1 इज अ पेरेंट. सो इफ यू रन दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस, वो सबसे पहले पेरेंट मॉड्यूल 1 में जाएगा. पेरेंट मॉड्यूल 1 में देयर इज अ बिफोर सूट एनोटेशन. इट विल चेक द एग्जीक्यूशन मोड ऑफ द टेस्ट सूट. If the execution mode of the test suite is Y, then all test cases which are there in module 1, they will get executed. Right? Now, तो फिर वो ये वाले टेस्ट केस में आएगा, यहां पे बिफोर क्लास मेंशन है. सो पर्टिकुलर टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन मोड अभी यहां पे चेक करेगा. इट विल चेक ओवर हियर कि यहां वाई है तो रन होगा, उसका @टेस्ट रन होगा. सो पॉसिबिलिटी नंबर 1, अगर टेस्ट सूट मतलब टेस्ट सूट मॉड्यूल का ही एग्जीक्यूशन मोड n है, तो वो पर्टिकुलर टेस्ट केस को चेक करने के लिए भी नहीं जाएगा. फाइन, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन मोड Y है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी वो टेस्ट केस के पास आएगा. नाउ टेस्ट केस में उसका एग्जीक्यूशन मोड n है, तो @टेस्ट रन नहीं होगा, यहां से स्किप करेगा वो. और तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर दोनों Y है, तो @टेस्ट एनोटेशन एग्जीक्यूट होगा. फाइन, सो दिस इज द कंप्लीट बिहेवियर ऑफ एग्जीक्यूशन, जो बाय सेटिंग अप, लाइक हम लोग बिफोर सूट और आफ्टर सूट में हम लोग यूजुअली ब्राउजर को क्लोज कराते हैं, ऐसा कोड आप लिख सकते हो. सो दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन, क्या उसको ऐसा इंप्लीमेंट कर सकते हो. अदरवाइज मैंने बताया कि कंपनी टू कंपनी, आपके प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, आपको बिफोर सूट आफ्टर सूट का यूज कैसे करना है, दैट यू हैव टू डिसाइड. ऑलराइट, बट यू कैन फॉलो दिस. ओके, इन अपकमिंग सेशन वी विल आल्सो सी द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑन अ रियल टाइम प्रोजेक्ट. इसको हम रियल टाइम प्रोजेक्ट में भी करके देखेंगे. सो यू विल अंडरस्टैंड इट कि अच्छा, ये एक्चुअल में कोड जो मैंने अभी बताया, वो लॉजिक हमने लिखा है, वो लॉजिक के अकॉर्डिंगली वो एग्जीक्यूट होगा. ऑलराइट, चलो, थैंक यू, बाय.